Moving on now, let's cut live to the mortal remains. There we're getting live visuals of mortal remains of SI Mohammad Imtiaz. They've reached Patna, from there by road to his native place at Chhapra in Bihar. He made the supreme sacrifice in cross-border firing by Pakistan in the Arispura sector of Jammu. He was given a final farewell with full honours, attended by J&K's Lieutenant Governor Manoj Sinha, BSF officials and local authorities. BSF Sub-Inspector Mohammad Imtiaz from Bihar laid down his life in the line of duty. He made the supreme sacrifice, viewers. His sacrifice mustn't go in vain. This is what cowardly attacks by the Pakistan have done. We've lost one of our brave hearts, a BSF trooper. There was killed in Pakistani cowardly firing along the international border in Jammu on Saturday. A senior BSF officer said that the sub-inspector made the supreme sacrifice while very bravely leading from the front. One of his close friends, who he had spoken to just day before this unfortunate incident, is in fact the BSF trooper, had told him that the situation is volatile, it's quite tense. While breaking down, he said he did not know that this would be the last time he would be speaking to his friend. हाँ, ये बात आपने सही। देखिए, यही मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी शहादत, हमारे इम्तियाज़ जी की शहादत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। अब आगे भी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने से बचेगा। हालांकि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है कि इस तरह की गलतियाँ वो हमेशा करता है और हमेशा वो मात खाता है और मात खाने के बाद भी फिर से वो हिमाकत करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार का जिस तरह से हमारे भारतीय सेना ने सीमा का उल्लंघन किए बिना ही उनके क्षेत्र में घुस करके उनके कई एयरबेस, डिफेंस और आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है, ये आज देश ही नहीं पूरा विश्व ने देखा है। और इसके चलते ही पाकिस्तान घुटने टीका। जिस तरह से वो कर रहा था, जिस तरह की उसकी हिमाकत हो रही थी और हमारे डिफेंस सिस्टम ने, हमारे सेना ने उनके सारे ड्रोन हमले, उनके सारे मिसाइल हमले को नाकाम किया। हम उनका कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमला हमारे आम लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाया। तो ये सेना का ही कर्तव्य है और करामात है कि वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे देश में हानि हो और उस हानि का हम लोग चर्चा करें। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह की हानि। Mortal remains of BSF trooper Mohammad Imtiaz reached Patna, from there by road to his native place at Chhapra, Bihar. The soldier posted along the international border in Jammu and Kashmir was killed when his unit came under intense Pakistani fire. Imtiaz, who had recently returned to duty after celebrating Eid with his family, was widely respected in his village for encouraging young people to join the armed forces. What a loss for us. What a massive loss for us. Imtiaz is survived by his wife, 2 daughters and 2 sons. A senior border security force officer said that Mohammad Imtiaz, the senior sub-inspector there, made the supreme sacrifice while
bravely leading from the front, people paying their last respects to the brave heart. उनके आखिरी नाम है। हालांकि उनका सीना चौड़ा है, गर्व से सीना कि उनके पिता ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। ये देखिए, ये कहा जाता है कि बेटे की सलामी। ये देखिए, इस समय सबके चेहरे पर, सबके आंखों में आंसू है। बेटा के द्वारा अपने पिता को श्रद्धांजलि दिया जाना, वो भी शहादत की श्रद्धांजलि दिया जाना, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। क्योंकि ये छोटा मोटा शहादत इसे नहीं कहा जा सकता है। इस शहादत को देश बचाने वाला शहादत कहा जाएगा। Mohammad Imtiaz lost his life during cross-border firing by Pakistan along the international boundary in the Arispura area of Jammu. हमारे बिहार छपरा के लोगों का सीना चौड़ा किया है। शहादत होती है, किसी का जाना सबके लिए बहुत ही दुखद होता है। हम लोग भी दुखी हैं, लेकिन गौरवान्वित भी हैं कि हमें ऐसे लाल को खोना पड़ा देश को बचाने के लिए। देखिए, अब अधिकारियों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। He very bravely श्रद्धांजलि fought from the front, led from the front as well, and laid down his life in the line of duty. A supreme sacrifice, viewers, there by Senior Inspector Mohammad Sub-Inspector, beg your pardon, Mohammad Imtiaz. His mortal remains have reached Patna. From there, they'll be taken to Chhapra, his native place in Bihar. Came under intense Pakistani fire. You remember that he was leading from the front. Imtiaz had recently returned to duty after celebrating Eid with his family. He was widely respected in his village for encouraging young people to join the armed forces. His friend, in fact, had spoken to him just a day before this unfortunate incident took place, and Mohammad Imtiaz told him that the situation is extremely volatile and is worrisome. Breaking down, he said little did he know that this would be the last time he would be speaking to his beloved friend. People now thronging in, senior police officers, to pay their last respects to the brave heart. Take a look. इस पर अमल करते हुए माकूल जवाब दिया है, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि हाथ के तीन बात, या फिर कहा जाता है कि एक भाषा थोड़ी गलत है, लेकिन कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं होती है। ये पाकिस्तान के लिए सर्दाश्त होता है, सबसे सटीक ये कहावत कहलाता है। वो बार-बार मार खाता है, कब नहीं मारता। Remains of BSF Sub-Inspector Mohammad Imtiaz, who was killed when his unit posted along the international border in Jammu and Kashmir's Arispura sector, which he was leading from the front, came under heavy Pakistani firing on Saturday, brought to Patna airport. आज का पाकिस्तान टेरर कंट्री हो गया है। आज पाकिस्तान Numbers to pay their last respects. Take a look. हमारे जो DGMO या सेना के